alaikum, dear class. Welcome to the next online class of software engineering. The topic of discussion today is the spiral model, which comes in the category of evolutionary process models. In the previous class, we have discussed the prototyping model, which was also categorized as evolutionary process model. These slides are based upon the Software Engineering, a Practitioner's Approach, which is a book written by Roger S. Pressman. So let us start the introduction of the spiral model. Here is the background of the spiral model and the basic definition. The spiral model, originally proposed by Barry Boehm, is an evolutionary process model that marries the best two worlds: the iterative nature of prototyping, which we have previously studied, and the controlled systematic aspects of the waterfall model. Class, imagine you are building something incredibly complex, like a new flight control system for an airplane. So obviously the controls of airplane are complex. So if we are building a software system to manage those controls of an airplane, or so this is going to be a very complex system. So ऐसे system के लिए you can't just use a simple waterfall model. Why? Because it is a very sensitive and critical system, so the risks are too high. तो simple waterfall model तो आप नहीं यूज कर सकते इसके लिए. So Barry Boehm, who is basically the person behind the spiral model, so Barry Boehm realized we needed the speed of prototyping, but the checks and balances of the waterfall model. तो Barry Boehm ने ये रियलाइज किया कि ऐसे कम्प्लेक्स सिस्टम्स को जिनकी डेवलपमेंट में जो रिस्क है वो बहुत हाई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड टू मैनेज द कंट्रोल्स ऑफ एन एरोप्लेन. सो बैरी बोहेम रियलाइज्ड कि ऐसे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जिनकी साथ बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, उनको हैंडल करने के लिए एक तरफ हमें प्रोटोटाइपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है, एंड सेकंड साइड पे हमें जो वाटरफॉल मॉडल के चेक्स एंड बैलेंसेस और जो उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. So he came up with an idea of the spiral model. So unlike linear model, जो कि ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल है या क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल भी कहलाता है, दैट इज द वाटरफॉल मॉडल. सो अनलाइक लीनियर मॉडल्स, द स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन. एज आई सेड कि ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है जो कि कॉम्प्लेक्स हैं एंड जिनके साथ बहुत हाई रिस्क एसोसिएटेड है. So the spiral model is risk driven, meaning the entire progression of the project is guided by identifying and solving potential problems before they tank the project. So what it means, what is meant by the risk driven model, कि from the very start to the very end, जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, that is going to be revolving around managing the risk that is involved due to its complexity. So at every phase, in every iteration, as it is an evolutionary process model, so we are again going to have multiple iterations. So with every iteration, we are going to spatially and specifically have a phase that manages the risk that is associated with that iteration. So there are two distinguishing features. According to Boehm, the spiral model is defined by two unique characteristics. The first one is that it has a cyclic approach. The system's definition and implementation grow incrementally with each circuit or pass, while the overall degree of the risk decreases. अभी आगे जाके मैं आपको स्पाइरल मॉडल की शेप बताऊंगा, तो उसमें वी हैव डिफरेंट सर्किट्स. एवरी सर्किट इज लाइक एन आइट्रेशन जो हमने पीछे देखा है, और अ पास. So
the implementation of the system grow incrementally, जैसे incremental model में होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल तो पार्ट्स में, सेपरेट पार्ट्स में सिस्टम को डेवलप करता है ना, यहाँ पे आइटरेटिव नेचर है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द evolutionary process model. So it is cyclic. Every time you complete a cycle or a circle, the software gets bigger, more defined, and the risk gets smaller. तो जैसे जैसे हम हर एक एक सर्किट को जो है वो कवर करते जाएंगे, एक एक साइकिल को या सर्किट को कवर करते जाएंगे, हमारा जो सिस्टम है इट विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. तो सिस्टम जो है वो इंक्रीमेंटली बिल्ड हो रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है. ऑन द अदर हैंड जो रिस्क है वो डिक्रीज हो रहा है. एंड द सेकंड पॉइंट इज anchor point milestones. These are specific checkpoints or condition met along the path to ensure all stakeholders, जिसमें कस्टमर और डेवलपर दोनों शामिल हैं, are committed to a feasible and satisfactory solution. So we use anchor milestones. So anchor milestone बिल्कुल contracts और agreements की तरह है, where हर कुछ टाइम के बाद, या यू कह लें कि हर साइकिल के बाद, everyone sits down and says yes, this version works, we are still on the right track and we are ready to spend more money on the next loop. So जैसे मैंने कहा कि एक साइकिल, एक सर्किट या एक लूप के कंप्लीट होने के बाद, so जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो दे कंसीडर इट लाइक अ माइलस्टोन और अ चेक पॉइंट, जहां पर वो सब इकट्ठे होके ये रियलाइज करते हैं कि यस, जो वर्जन अभी हमारे पास आया है, दिस इज वर्किंग, दिस इज व्हाट वी वांट, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, एंड वी आर रेडी, जैसे मैंने पहले कहा कि टू स्पेंड मोर ऑन द नेक्स्ट लूप. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो इसकी साइक्लिक अप्रोच है, एंड द सेकंड इज दैट एंकर पॉइंट माइलस्टोन. थर्ड, जो एवोल्यूशनरी नेचर है स्पाइरल मॉडल की. First, let me show you the shape of the spiral on the next slide. Here you can see, this is the spiral model. We have different circuits, we have different loops, we have different cycles. So focus on this cyclic nature of the spiral model. इसको गौर से देखें. And now come back and discuss this evolutionary nature of the spiral model. Look at the shape of the spiral. You start at the very center with almost nothing. Start में कुछ भी नहीं है. We are starting at the very center. As you move clockwise move करें, you pass through planning and risk analysis. In the first lap, your release might just be a document. जब पहली iteration, पहली cycle complete होगी, so you may end up like giving a simple document which might contain some basic requirements. On the second lap, it's a prototype. By the third or fourth lap, you have a working software versions. So every time you pass the planning sector, you adjust your cost and scheduling based on the feedback you got from the last lap. तो जो इनिशियल साइकिल्स हैं या जो इनिशियल सर्किट्स हैं, वो आपको, जैसे यहां पर कहा गया कि पहला साइकिल या सर्किट जब आप कंप्लीट करते हैं तो इट मे गिव यू ओनली अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जबकि जब सेकेंड आइट्रेशन या जो सेकेंड स्पाइरल या सेकेंड सर्किट या सेकेंड साइकिल, ये डिफरेंट नेम्स इसके लिए यूज होती हैं, जब आप वो कंप्लीट करेंगे, यू मे एंड अप हैविंग अ प्रोटोटाइप, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वर्जन में like start giving you the releases of the or the different versions of the software. You getting my point, right? So let's move forward. A life cycle model, that is the title of the slide. Now, a unique advantage of the spiral model is that it does not necessarily end when the software is delivered. It can be adopted to the entire life cycle. Entire life cycle में सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी आती है और उसकी ऑपरेशंस
जो ऑपरेशनल लाइफ है वो भी आती है, और उसके बाद जो उसमें एनहांसमेंट की जाती है, जो मेंटेनेंस है वो भी आती है। सो अगर आप इस जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जो स्पाइरल दिखाया है उसके सर्किट्स को कंसीडर करें, तो फर्स्ट फ्यू सर्किट्स को आप you can like consider them the concept development. The first few circuits might just be exploring if an idea is even possible. जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया भी है कि the first circuit may give you the document, the next one may give you the prototype, and then third or fourth one may start giving you the actual versions. So the first circuit might just be exploring if an idea is even possible. Then if the concept is approved, the spiral moves outward to build the actual products. जैसे मैंने कहा third, fourth, fifth, sixth and so on, different circuits. And then we have the product enhancement. Later circuits are used to add features or update the system. The spiral remains operative until the software is retired or it is completely abandoned. So basically what they want to say is that one of the coolest thing about the spiral is that it does not die once you ship the software. जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये खत्म नहीं हो जाएगा ये स्पाइरल। अदर जो मॉडल्स हम इससे पहले पढ़ कर आए हैं, अदर मॉडल्स ट्रीट डिलीवरी एज द एंड, बट द स्पाइरल ट्रीट्स इट एज जस्ट वन मोर लूप। आपने डिलीवर कर लिया, दैट इज वन लूप, बट द लूप कंटिन्यूज। If the customer wants a product enhancement 2 years later, you don't start the whole new project from the scratch. You just start a new circuit in the spiral. It stays active until you need it, and then it guides the update process. And as the last point of the slide says, okay, the spiral remains operative until the software is retired. Advantages of the spiral model. Why do we use this for large scale systems? The first reason is that it forces us to talk about risks. Most projects fail because of the hidden technical risk or the problems. So it is the most robust model for considering technical risk at the early stage, because you can see that risk assessment is a part of the planning and considered in every circuit of the spiral. Then realism. It reflects the real world iterative nature of large scale system better than linear model. It supports the actual real world software development. Then we have the flexibility. It uses prototyping as a mechanism to reduce risk at any stage of evolution. We have the stepwise control, जैसे waterfall model की control की हमने बात की थी. It maintains the disciplined and systematic approach of the classic life cycle model within its loop, जिसको हम circuits कहते हैं. So the summary of the slide is that most projects fail because of hidden technical problems. The spiral model demands you look for those problems in every single lab or circuit, जिसको हम risk analysis कह रहे हैं. So, and then next points क्या कहते हैं कि it combines the build and see flexibility of prototyping. यही है ना prototyping के build and see. Build a prototype, build a preliminary version of the software, build and see flexibility of prototyping with the measure twice cut once discipline of the traditional engineering, जिसको हम कंट्रोल्ड डिसिप्लिन कहते हैं या सिस्टमैटिक अप्रोच हम कहते हैं ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की. सो इट इज अ वेरी रियलिस्टिक वे टू हैंडल हाई स्टेक सॉफ्टवेयर जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है. एंड देन फाइनली द डिसएडवांटेजेस और द चैलेंजेस ऑब्वियसली. सो स्पाइरल मॉडल के जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं उसमें कस्टमर कन्विंसिंग, द एक्सपर्टीज रिलायंसेस एंड द फैटल फ्लॉज. Now, it can be difficult to convince a customer that an evolutionary approach is controllable, especially in fixed price contracts, because the software is continuously being evolved in different circuits. So, it is very difficult to convince the customer
कि ये जो अप्रोच है ये कंट्रोल हो जाएगी एंड इट विल बी इन योर बजट एंड इट विल गिव यू अ टाइमली प्रोडक्ट. Again, the second point is expertise of risk management. As you can see, ke risk planning, risk analysis, risk management is a part of the every circuit of this spiral model. So it heavily relies on having staff with considerable risk assessment expertise. And then obviously the last point, that if a major risk is not uncovered during a circuit, the project will face significant problems later, just like any other model. So it basically requires your managers to be risk experts. If your team is not good at like spotting potential technical disaster, so then the spiral is just a very expensive way to go in circles. It only works if you have the expertise to manage the risk you find. So it can backfire if you do not have the capability of managing risk, so it can backfire big time. So these are the disadvantages of the spiral model. I hope the lecture is clear. If you have any question, you are more than welcome to ask. Thank you very much.